टाटा स्टील को लेकर ये भी, लेकिन नतीजे कमजोर आए थे क्वेस कॉर्प के। अगर हम नतीजों की बात करें तो रेवेन्यू जो है आय 7% गिरी है। मुनाफे की बात करें तो 41% की कमी वहां पर आई है, ये बड़ी कमी है। एबिडा यानी कि कामकाजी जो मुनाफा है वहां पर भी 12% के आसपास की गिरावट है। तिमाही दर तिमाही आधार पर ये सारे आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। और मार्जिन भी प्रेशर में आया है, 3.85% से घटकर 3.16%। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज शेयर कमजोर है, करीब करीब 5% के आसपास। नतीजों पर खास बातचीत करने के लिए और आगे का आउटलुक हमसे शेयर करने के लिए, पूरा माहौल समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के सीईओ गुरुप्रसाद श्रीनिवासन। श्रीनिवासन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके ET नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए हर फ्रंट पे हम कमजोर नतीजे देख रहे हैं, मार्जिन भी इंपैक्ट हुआ है। सर, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है और अब क्या यहां से हम रिकवरी देखेंगे या फिर थोड़ा सा दबाव भी जारी रहेगा कुछ समय तक? Sure, Abhishek ji, thank you so much. Thanks for having me. Let me start with the head count. So the first benchmark is that we have crossed 500,000 deployment of our head count in the market. So which is one of the highest benchmark that we have achieved. Coming back to our revenue has grown by 32% year on year, and our EBITDA year on year has grown by 20%. Coming back to margin, of course we have shrunk the margin rate from 3.85 to 3.16. इसमें दो तीन चीज है। एक, इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं ऑन टू वेरियस फ्यूचर रेवेन्यू स्ट्रीम्स। एक है मॉन्स्टर में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरा, वी आर नाउ सेटिंग अप ए सेपरेट टीम टू रन यूएस में, टू रन दी प्रोफेशनल स्टाफिंग। बहुत डिमांड है वहां पे। प्लस थोड़ा आईटी हायरिंग में थोड़ा डाउनसाइज हुआ है बिटवीन Q1 एंड Q2। उसका इम्पैक्ट थोड़ा मार्जिन पे आ रहा है। सो कैसा ये रिकवरी होगा बाय Q3? It should recover a bit from 3.16. Marginally we should come to 3.4. So that is how the outlook is currently. ओके, बट श्रीनिवासन जी, जैसा कि आप बात कर रहे थे कि आपकी जो हायरिंग्स है वो रिकॉर्ड स्तरों पे आती हुई दिखी हैं, पर अगर हम देखें तो काफ़ी सारे टेक लेऑफ्स हम खबरों में भी सुन रहे हैं। ग्लोबल कंपनीज भी कर रही हैं, इवन इंडियन कंपनीज भी कर रही हैं। आगे के लिए हायरिंग का क्या आउटलुक बनेगा? Good question. See, Abhi, the leading business for Quest within workforce management is our general staffing, which is what is adding majority of headcount. So Q1 we added 25,000 headcount. Q2 also we have done a similar kind of, and entire last year, that is FY22, we had done 57,000 addition. In H1 this year we have done about 60,000 plus, so which is a good outlook for us. But Q3 and Q4 में थोड़ा म्यूटेड है। So if I take ITS specifically, वहाँ पे तो स्लो डाउन है, and we have been calling out for last almost since 2 months we have been talking about it. स्लो डाउन हायरिंग में हुआ है, and I think this phenomenon will continue for Q3 and Q4. With regard to our general staffing business, our demand are still coming in. Moderate demands are coming in from the traditional industries. BFSI is hiring, manufacturing में hiring हो रहा है, telecom and logistics supply chain में तो hiring हो रहा है. But yeah, the quantum is not as expected or as we had anticipated. ठीक है सर, एक बहुत ही क्रूशियल सवाल आपसे जानना चाहेंगे श्रीनिवासन जी, उसका जवाब आपसे चाहेंगे। क्योंकि आपकी जो कंपनी है स्टाफिंग सॉल्यूशन से जुड़ी है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री या फिर देश की पूरी इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है, आप काफ़ी अच्छा सेंस आप दे देते हैं। आप ये बताइए कि इस वक्त देश में जो हायरिंग का जो ट्रेंड चल रहा है, कहाँ पर ज़्यादा हायरिंग हो रही है? और एक और चीज़ आप बताइए कि अगर आपको अपने मार्जिन को और यहाँ से ऊपरी स्तर पर ले जाना हो, बढ़ाना हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, किस तरह से चीजें मैनेज करते हैं? परफेक्ट। पहले मार्जिन के बारे में बोलता हूँ। सो एक, हमको वी हैव टू बी शार्प ऑन आवर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा फॉर Q3 and Q4, so which is a priority for not only us, for many organizations, because it has a direct impact on the EBITDA. Second is some places where we have made investments, वहां से रेवेन्यू आना चालू हो जाएगा फॉर Q3 and Q4.
that should ease out a bit on the margin. So these two are our key leverages. One is cost, second is working tough on the investments where we have made. These two will be our focus to improvise our margin. With regard to specific for hiring, as I said, the BFSI sector still seeming to be very promising in terms of the mandates that are coming in. Logistic and supply chain mein kya ho raha hai, they are entering into tier 3, tier 4 kind of cities. And one important data that we are seeing is most of our hiring demand which is coming in are from tier 3 and tier 4 kind of cities, where whether banking is penetrating deeper into those cities, or logistics supply chain, or manufacturing greenfield projects are being set up. So wahan se outlook aa raha hai. Going forward, we see demand continue to come in from manufacturing and specifically construction, manufacturing and telecom segments a lot for Q3 and Q4. ओके बट श्रीनिवासन जी, अगर हम आगे के ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो आपने गाइड किया है कि कंपनी करीब 21 से 23% साल दर साल बढ़ती हुई नजर आएगी बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 25, और ये अक्रॉस द वर्टिकल्स आपने ऐसा जताया है कि सभी सेगमेंट्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट जो एनालिस्ट समझ रहे हैं उनका ऐसा कहना है कि ये जो आपकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन है इस ड्यूरेशन के अंदर वो डबल हो सकती है। क्या ये एक्सपेक्टेशन सही है? क्या ऐसा होते हुए हम देख सकते हैं? क्या कंपनी भी यही फैक्टर इन कर रही है? गेट डबल थोड़ा लिटिल एग्रेसिव है, बट हिस्टोरिकली वर्कफोर्स मैनेजमेंट तो 33% ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर इफ यू लुक एट द डेटा, एंड आवर जीटीएस बिजनेस इज आल्सो ग्रोइंग 23% year on year, and OAM, which is our asset management business, which was almost slowed down for last 8 quarters, has slowly started recovering. So वहाँ पे headcount बढ़ रहा है. So I think to stick to 20% is something is still, I think, is possible. श्रीनिवासन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों के अलावा आगे की आउटलुक पर भी हमसे चर्चा करने के लिए और जानकारियां शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और दर्शकों के सवाल लेंगे।